Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. I mean, मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ये देख के कि दिस इज हाउ द कपल शुड बिहेव, दिस इज हाउ एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आप जितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को पहले निकालोगे, आपका गेम प्ले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम अंकिता एंड विकीज साइड, जो अभी उनका गेम प्ले है। अदरवाइज इतना सीरियस नॉमिनेशन किसी ऐसा नॉट इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट को नहीं मिलता। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं नील की बहन हूँ, आई हैव सीन हिम ग्रो अप, तो इवन बिटवीन मी एंड हिम ही इज ऑलवेज बीन द आइडियल ब्रदर, द आइडियल सन, एंड मैं हमेशा मस्तीखोर थी। दिल के रूम में जब वो गए थे तो उन्होंने अपने दिल का रोमांटिक साइड दिखाया विद ऐश्वर्या, एंड अभी वो दम के रूम में गए थे। यू कैन सी like a classic change in character where he's showing his dum, where he's showing his power. Hi guys, this is Simran and I'm in conversation with someone जिनका भाई बिग बॉस 17 के घर में लॉक्ड है. I am here with Shikha Bhatt, who is Neil's sister. Hi Shikha, welcome to India Forums. Hi, thank you so much. Namaste everyone. How are you? And are you watching the show? What is it like? I think Big Boss has become an extremely important part of my current life. I think day and night Big Boss से मैं hooked हो गई हूँ। नील को देखने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। I am enjoying it. Like मुझे नहीं पता था कि नील के इतने भी अवतार हैं। जैसे आपने बोला इतने अवतार, I can truly see him as a contestant who's had a genuine growth. He wasn't like prepared from day one. He didn't know any strategy कि ऐसे खेलते हैं. Like he didn't come with a game. He actually built his own. So what do you want to say about this genuine growth? Also, Big Boss told him like a first bencher on the last weekend ka war. So what do you want to say about that? Actually, because मैं नील की बहन हूँ, I have seen him grow up. So even between me and him, he's always been the ideal brother, the ideal son, and मैं हमेशा मस्तीखोर थी. But in that case, मुझे उसका ये जो बेसिक फाउंडेशन जो है उसका कैरेक्टर का, वो डेफिनेटली थ्रू आउट है. बट आप जैसे उसको देखोगे, दिल के रूम में जब वो गए थे तो उन्होंने अपने दिल का रोमांटिक साइड दिखाया विद ऐश्वर्या, एंड अभी वो दम के रूम में गए थे. यू कैन सी like a classic change in character where he's showing his dum, where he's showing his power, and he's playing along with it. Like wo literally he's looking like a lone warrior. So definitely very proud of him, very proud of his performance. जैसे आपने बोला लोन वॉरियर, बट ऑफ कोर्स ही इज देयर विद ऐश्वर्या. सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक इमोशनल सपोर्ट, जहाँ पे हम देख रहे हैं एवरी डे वन और द अदर कंटेस्टेंट इज हैविंग दिस ब्रेक डाउन, दे वांट टू गो होम. He still has ऐश्वर्या. What do you want to say about both of them? How is the equation like? Because जब से घर में गए हैं ना, तो it is more like कि Aishwarya is the chid kind of girl. That is what is coming across. And Neil is the green flag on Instagram. Like he's the proper green flag. So what do you want to say? I think in that case मैं ये कहना चाहूंगी कि it is the classic fire and ice combination. मुझे it's the dance of fire and ice, मुझे ऐसा लगता है. बट डेफिनेटली आई थिंक जब नील और ऐश्वर्या अपनी जर्नी स्टार्ट किए विथ मैरिज एंड एवरीथिंग, they have constantly been my hashtag power couple. I'm not even joking, because before Big Boss and during Big Boss, there has been so much of back and forth, ebb and flow. कितने उतार चढ़ाव उन्होंने साथ में देखे हैं, and every time I see that they come back stronger, not one times, not two times, but 3 गुना ज़्यादा. Like I love it. मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. I mean, मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ये देख के कि दिस इज हाउ द कपल शुड बिहेव, दिस इज हाउ एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. सो या Right. Coming to the other couple in the house, ये couple versus couple कैसे हो गया? Like where do you think it all began? Because it's always been like Aishwarya Neil versus Ankita Vicky at some or the other place. So why do you think that has happened? आई थिंक बहुत सारे ये जो क्रैक्स है फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ स्टार्ट हो गए थे. फाउंडेशंस लेन होना जब से दिल के रूम में थे. आई रिमेंबर अंकिता एंड विकी वोटिंग नील एवरी टाइम, एंड कन्वीनियंटली सेइंग कि नील का फैन फॉलोइंग इतना स्ट्रांग है तो वो बच जाएंगे. And I feel like that had already been started from the beginning, and I think it grew into a much bigger proportion. जब भी आप last episode देखोगे तो उसे series nomination मिला है.
तो Exactly. मुझे लगता है कि इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू वन पर्सन विनिंग द कंपटीशन, राइट? तो द मोर आप जितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को पहले निकालोगे, आपका गेम प्ले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम अंकिता एंड विकी साइड, जो अभी उनका गेम प्ले है. अदरवाइज इतना सीरियस नॉमिनेशन किसी ऐसा नॉट इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट को नहीं मिलता. दैट्स व्हाट आई थिंक. True. Coming to the gravity of Vicky and Neil's fight, there hasn't been a very like big fight to actually nominate someone for the entire season. Do you think it is like purely a game move? That's what I'm saying कि अगर ऐसा होता कि नील अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है तो इतना सीरियस नॉमिनेशन उसे क्यों मिलता? बिकॉज सब जानते हैं कि नील का फैन बेस है जो उसे बहुत प्यार करता है. स्पेशली उसके जितने भी सीरियल्स हुए हैं पहले भी, जितने भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं, ही इज ऑलवेज बीन द गुड बॉय इवन ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. So I think because of that, there is this, back of the head, कि ये एक strong contender है, उसका backing है, and fans love him for what he is. So I think that is the gameplay. Do you think कि Neil and Ankita had a good equation? It wasn't ever like, bitter. But this nomination, when the scooter thing happened, एक थोड़ा सा टिफ हो गया था दोनों के बीच में, which was also not too bad actually. But it was something in the line only. But Ankita was like, कि Neil तेरा अभी असली side दिख रहा है. This is what you are. All of that. So what do you want to say on that? I think in that also नील ने तभी भी अंकिता को यही जवाब दिया था कि the first 2 weeks 3 weeks में आपको टाइम दे रहा था कि आप विकी के छत्र छाया से निकल के अपने गेम प्ले में आए. बट आई थिंक वो काफी टाइम तक नहीं हुआ. और मैं नील को पर्सनली जानती हूँ, वो कभी भी वेंजेंस नहीं निकालता है, कभी भी बदले वाला इंसान नहीं है. वो हमेशा परफॉर्मेंस बेसिस पे किसी को नॉमिनेट करेगा या नहीं नॉमिनेट करेगा. तो आई थिंक इन दैट केस जो उसने अंकिता को जवाब दिया कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स where you have third wheel in game planning and manipulation. I think that is the only reason why uska nomination hua hai Ankita ka. Right. Yesterday Neil had the power कि पूरे घर को भूखा रख सकते थे, but he chose again to be the right person and like distribute and maybe like he could have obviously not given anything to anyone and kept it all on his own. What do you want to say? Is he like that? Is he the sharing is caring? भैया बिग बॉस का फेवरेट कंटेस्टेंट ऐसे नहीं बनता हूँ. मैं तो यही कहना चाहूंगी. इट्स ओनली बिकॉज नील में जितना जिगरा है, जितना दिल है, तभी जाके वो इतना जिन लोगों ने उसे नॉमिनेट किया है सीरीज नॉमिनेशन में, वो इजीली वेंजेंस लेके, बदला लेके, खाली खाना अपने पास रख सकता था या राशन अपने पास रख सकता था. बट उसने वो नहीं किया बिकॉज वो भी जानता है कि वेंजेंस खाली एक शॉर्ट गेम है, शॉर्ट लिव्ड गेम है. I think the long-term game, at the end of the day, after all the manipulation, after all the backstabbing, everything, it comes down to the person's performance. Jo I think Neil is made of all of that. Right. Like you said कि Neil बदला नहीं लेता, but according to Ankita, that is what he did when he nominated her. Like the ripple effect happened. Vicky nominating Neil. I think so. I think ये ripple effect start हुई थी already from the other side. It did not start from Neil's side, and Neil's nominations with Ankita and Vicky have been backed with reasons. Especially जब Vicky ने उसके relationship के बारे में बात करना शुरू किया, अंकिता ने भी उसे सपोर्ट किया, तब जाके ये सब चीज one after the other ripple effect build हुई है. So I would not say that Neil is the cause of the ripple effect. I think it has come from the other side. Right. When it comes to Neil Aishwarya, they've always we see them together, but again when it comes to the game, they've come as individuals. Do you think they should spread out more and like make individual friendships also, other than just like a couple friendship की अगर ऐश्वर्या नील दोनों के friend हो आप तो friend हो, वरना you can't be individual friends. Like we don't see them hanging out individually with people as much. इनफैक्ट आई थिंक कि इन द रीसेंट फाइट जब अंकिता और नील का फाइट हुआ था, काफी सारे टाइम ऐश्वर्या वो फाइट में इन्वॉल्व ही नहीं हुई थी जब तक अंकिता के साइड से पोकिंग शुरू हुआ था. सो आई थिंक दे वेरी आफ्टर, स्पेशली आफ्टर सलमान सर्स फीडबैक, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग देयर गेम ऑन देयर ओन, started building their relations on their own and taking stands of their own. Especially जब आप देखोगे तो ऐश्वर्या ने खानजादी के साथ फूड के टाइम पे जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं हुआ था तो अपना स्टैंड खुद से लिया, भले नील उससे अग्री नहीं करता था. सो
there have been a lot of moments where they have started taking their own stand. So I think that जैसे आपने बोला progress होता है, आप जैसे game आगे बढ़ती है, वो लोग समझते हैं कि these are the changes I need to make my gameplay stronger. I think they are definitely incorporating that. Okay, before we wind up, we saw Ankita and Vicky's parents go inside the house. Like they had a proper 20-minute, half an hour discussion. Do you think it's fair at this point of the game, wherein, like, normally we see after 2 months, 3 months, parents aate hai, we have a family week where equally everyone has gotten the opportunity to meet. But यहाँ पे थोड़ा सा, do you think that bias is there? Like Anurag continuously says in the house that there's a biasness towards Ankita and Vicky. But Anurag has also changed his point of view. So, I mean, it's like, I think every week the equation keeps changing. So, I don't think I'm anyone to comment about that bias. But मैं ये definitely बोल सकती हूँ कि from Neil and Aishwarya's perspective, कि I don't think कि उन्हें ये backing की ज़रूरत है या ये guidance की ज़रूरत है. वो अपना gameplay definitely strongly खेलेंगे और जो मुझे दिख रहा है already. तो जिनको थेरेपी की जरूरत है उन्हें मिलेगी और जिन्हें नहीं है उन्हें नहीं मिलेगी. So I think that's where I would want to end it. Okay, before we wind up, if you had to tell us people who you think Neil and Aishwarya can trust and cannot trust, who do you think they are? As in, I didn't understand. I mean, in the game, if they had to trust few people and not trust few people, who do you think comes in? So, if I would want to tell Neil and Aishwarya who to trust and who shouldn't they trust, I definitely think that जैसे Big Boss ने recently Big Boss नहीं, sorry, सलमान सर ने recently कहा था कि खाली नील और रिंकू जी दो लोग हैं जो विकी के झांसे में नहीं आ सके हैं मैनिपुलेशन के. सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू से दैट रिंकू जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो अपने दिमाग से सोचती है, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होके, और वो राइट चीज को राइट भी बोलती है, रॉन्ग चीज को रॉन्ग बोलती है. तो इन दैट केस मुझे लगता है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक वाला सिचुएशन क्रिएट होता है. एंड डेफिनेटली नील शुड कीप रिंकू जी एज अ पर्सन टू ट्रस्ट. Okay, and not trust, who do you think? Do you think if Vicky comes up with the friendship perspective or like this thing? I don't think Neil will trust, and I think it's very obvious that I would say Vicky and Ankita. Right. Thank you so much. And suppose, like, when Neil and Aishwarya come out of the house, if they had to see this message from you, what would you like to tell them? And there are fans who've been constantly supporting. There are, hashtags every day. There are edits that are made. What do you want to tell all of them? I would want to say first to Neil and Aishwarya that I am extremely proud of both of y'all. The जितना difficult situation से आप दोनों गुजरे हो, I don't think इतना powerfully comeback किसी ने किया है. No wonders y'all are my power couple. So mwah, mwah, to both of you. And to the fans, mwah, mwah, mwah. Thank you for supporting. मुझे कभी-कभी इतना अच्छा लगता है क्योंकि personally मुझे भी messages आते हैं fans के डोंट वरी, हम नील भैया को सपोर्ट करेंगे, आप टेंशन मत लो, एंड वेरी एनकरेजिंग मैसेजेस, बहुत अच्छा लगता है. सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू से थैंक यू, एंड आपके सपोर्ट से हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है कनेक्ट करने को. सो थैंक यू. True. Thank you so much for taking out the time and doing this. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.